have any idea. Okay, Vinod, please tell me your answer. No, ma'am. Actually, I have no idea. Very good, very good, very good. Okay, I am really happy with Karan. That means at least he told something. Whatever in his mind, whether he didn't bother about correct or no incorrect, he just got the courage and told the answer. That one, for that only, I am really very happy with him. I'm really very happy. But yeah, answer is future tense. Why future tense? You see, we can't predict any time because I shall go. I shall go to दिल्ली. मैं दिल्ली जाऊंगी या मैं दिल्ली But जा ma'am, सकती in हूँ या its future जाऊंगी. tense, दैट मीन्स दिल्ली जो जाऊंगी वो मेरा फ्यूचर है. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम है वो टल भी सकता है या मैं जा भी सकती हूँ. दैट मीन्स देयर इज नो कन्फर्मेशन. फ्यूचर में कोई कन्फर्मेशन होता ही नहीं. दैट मीन्स फ्यूचर मतलब वो खाना खाएगा, वो खाना खाएगा, वो खाना खाएगा या बाहर बैठेगा या सोएगा, इसका कोई पता नहीं. बस यही है टाइम, यही जो फ्यूचर है. देखो पास्ट, पास्ट में तो कोई रह नहीं सकता. प्रेजेंट के बारे में किसी को मतलब प्रेजेंट में जो काम करना है प्रेजेंट में ही करना है. और फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, ना कोई फ्यूचर में जा सकता है और ना ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है. कंफर्मेशन कोई भी भगवान भी आकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज द टाइम, वो फ्यूचर वो भविष्य काल ही वो टाइम है जहां पर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं चलता. अगर होगा तो अच्छा तो हुआ, अगर होगा नहीं अच्छा तो वो भी हुआ. डिड यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? डिड यू अंडरस्टैंड माई आंसर? आप लोगों ma'am, को but कुछ in हाँ its मैम. future समझ में tense, आया? आप लोगों को कुछ डिड यू अंडरस्टैंड Yes ma'am. एनीथिंग? यस यस प्लीज. हेलो समवन प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes ma'am. ma'am, please again. ओके शिखा, डिड Can यू you? अंडरस्टैंड? Ma'am. Shikha, did you understand? What are you doing? Only ma'am telling yes or Ma'am, no, can nothing. I? Uh, Ma'am, can I tell? yeah, please let me know about Shikha, what she is telling. Shikha, did you understand? What did I mean? Ma'am, little bit. A little bit. Okay, okay. Okay, then please listen to Karan. He will start. He will try. Then I will see whether Okay you ma'am. are understanding. Okay ma'am. In this question, ma'am will didn't give that we will tell about the perfect and continuous these type of forms. Ma'am only give the question that is based for only tense, because there is three forms in tense: past, present, and future. In past, we can't live in past. That's why. Pardon? And in and in future, sorry, and in present, all the works are done in at a part of our life. Sorry, at the side, that all the things are done that we see. And in future, it is not confirmed. It is not confirmed that it is not confirmed that in future this thing done, or this thing may be done or not be done. That's why in future tense we can't predict any time. Means in future tense the time is not confirmed. Like मैं मैं बाजार जाऊंगा. I will go to market. There is he now he did now he was not. Now it is not confirmed that he will be gone. That he will be go to the market. He can be go or he not be go. That's why in future tense
The time is not confirmed. Yeah, ma'am. That's all. Tell in Hindi. इसका मतलब है कि फ्यूचर टेंस में फ्यूचर भविष्य में टाइम जो समय होता है वो कंफर्म नहीं होता मीन्स जैसे कि हम पास्ट में तो जी नहीं सकते क्योंकि पास्ट में जो भी काम होते हैं वो हमारी आंखों के सामने होते हैं प्रेजेंट सॉरी पास्ट और प्रेजेंट में हमें जो भी काम करने होते हैं हम प्रेजेंट में ही कर लेते हैं मगर फ्यूचर में हमें यह पता नहीं होता कि वो काम हम जरूर करेंगे कि नहीं हम वो काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा अभी मैं गया थोड़ी ना हूँ मैं जाऊंगा मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता इसलिए इसलिए भविष्य काल से भविष्य काल समय भविष्य काल में समय कंफर्म नहीं होता. That's all. Very good, very good. So now did you understand, Harshit? Yes, ma'am. But ma'am, what is the actual meaning of predict? Predict means confirm, मतलब बोल नहीं सकते हम, अंदाजा नहीं लगा सकते. अंदाजा लगाना, प्रेडिक्ट, अंदाजा लगाना. एकदम निशाने की तरह अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम भविष्य में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कहाँ जाएंगे. जा भी सकते हैं, बन भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, इससे बेटर भी हो सकता है. अच्छा है ना. तो इस भविष्य के टाइम को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल क्या होने वाला है, इसके बाद 5 मिनट बाद क्या होगा, ये कोई नहीं बता सकता. So we cannot confirm, we cannot predict any time what is given in the future. So did you understand now? Did you understand?